Good morning, sir. Good morning. Thank you, sir. तो भावना जी, Yes, sir. what has been अपने बारे में कुछ बताएं. Okay. Sir, my full name is Bhawna Agarwal, and I belong to Palwar city of Haryana. And I did my schooling from there itself. I graduated from NIT Kurukshetra in 2021 and from electrical engineering. I did my internship in L&T thermal power plant in Rajpura, Punjab. Okay. Why do you want to join IES? So from the very starting, I just wanted that whatever job I want to join, it should not be monotonous. And so I think that IES is the best job which provides me a lot of diversity, and also I will get to use my technical skills as well as the managerial skills. You know that engineering services, you can be posted anywhere in the country. Yes, sir. Will you have any reservations for posting anywhere? No, sir. I'm okay with posting anywhere. Anywhere in India? Yes, sir. Okay. What has been your favorite hobby? Sir, it's meditation. Meditation? Yes, sir. What motivated you to go for that? Sir, it helps me in remaining calm and positive, and I can do work efficiently in this fast-paced work. I think it is very much necessary for every individual. Are you connected with any institution? Sir, Vipassana meditation. Which one? Vipassana. Vipassana? Yes, sir. Okay. Where you have been to in Vipassana? Sir, Sona. सोना में होता है ये? Yes, sir. Okay. अच्छा. What is reading self-help? Sir, it is reading self-help content means that how can you deal with the challenges you face, and how can you excel in your life, in your relationships, in your professional life. आपको सिंगिंग का भी शौक है? Yes, sir. तो कैसे how will you हमको कैसे बताएंगे कि आपको कैसे क्या क्या किस टाइप के गाने पसंद हैं? क्या सिंगिंग म्यूजिक में कोई कोर्स कर रखा है आपने? नहीं सर, मैंने म्यूजिक में कोई कोर्स नहीं किया है, बट शुरू से मुझे बॉलीवुड सॉन्ग्स सुनने में और गाने में इंटरेस्ट है, और मोस्टली भजन्स में. मोस्टली भजन्स. अच्छा. ओके. You have done graduation in which year? 2021 pass out, sir. So what did you do in between? Sir, after 2021, it was the COVID era. So I was preparing for ESE. Last year, I could not qualify prelims. So I started with full-fledged preparation. Okay. So in between कोई job वगैरह किसी? नहीं सर. नहीं किया. तो अभी आप कहाँ रहते हैं? पलवल में रहते हैं? सर, अभी मैं दिल्ली में रह रही हूँ. दिल्ली में रहते हैं? यस सर. आपका इंटरव्यू कब है? फॉर्मल इंटरव्यू? Sir, it is in phase 2, 18th of October. 18th अक्टूबर. एक छोटी सी हम इलेक्ट्रिकल की ऐसी जनरल बात पूछ रहे थे कि यार ये जो ट्रेन में जाते हैं तो मोबाइल फोन चार्ज हो जाता है उसमें, तो क्या कोई स्पेशल उसमें तो डीसी करंट होता है ना ट्रेन में? सर, मोबाइल को डीसी ही चाहिए, उसमें जो बैटरी चार्ज होती है उसको डीसी ही चाहिए, तो डीसी अवेलेबल होता है. और बाकी घर में एसी आता है, बट देयर इज अ रेक्टिफायर इन मोबाइल, सो विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर वी कैन कन्वर्ट एसी टू डीसी. तो जो उसमें ट्रेन में जब लगाते हैं तो सेम ही तो इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, उसमें तो कोई चेंज तो करते नहीं हम लोग. सर, वहाँ से डीसी सप्लाई आ रहा है और हमारे मोबाइल को डीसी ही चाहिए, तो वो रेक्टिफायर की ज़रूरत नहीं होती. तो अगर डीसी को भी हम सप्लाई देंगे उसमें तो कुछ फर्क नहीं आएगा. और ये जो आजकल एलईडी बल्ब लगते हैं, यस सर, और ये बल्ब जो होते हैं नॉर्मल बल्ब होते हैं सीएफएल, इनमें क्या अंतर होता है? सर, these LED bulbs they work on
They are the semiconductor technology. While CFL bulb में they work on induction. सर इसमें मर्करी गैस होती है जो हम AC वोल्टेज से हाई वोल्टेज देके उसे आयनाइज करेंगे जिससे वो ग्लो करता है इन CFL. अच्छा. और वाइल LED में क्या होता है कि हम उसे करंट देंगे जिससे फोटॉन्स जनरेट होंगे और वो लाइट एमिट करेंगे. तो वो उसका भी वोल्टेज का कोई असर नहीं होता उन पे? इतनी बड़ी वोल्टेज आ रही है, छोटे छोटे बल्ब होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं उसको? सर अभी हम ये LEDs ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंट है. नहीं वो नहीं, वोल्टेज को कैसे मैनेज करते हो? उस वोल्टेज को जो 220 आ रही थी. सर वोल्टेज तो सेम ही. अच्छा. आई एम नॉट श्योर सर. और कोई स्पोर्ट्स में कोई और भी हॉबी? स्पोर्ट्स में इन माय कॉलेज आई लर्नड अ लिटिल स्विमिंग एंड आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन. अभी रिसेंटली कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल इवेंट हुआ इंडिया में? रिलेटेड टू व्हाट सर? कोई भी इंटरनेशनल इवेंट कोई बहुत बड़ी सर हुई? G20. G20. Yes sir. What does G20 means? G20 means it is a group of 20. G20 means group of 20, but there are 19 countries and one is European Union. Okay. So are you bit excited about G20 or is simple आया एक और चला गया? नहीं sir, I am excited. Excited. Yes, What made you excited? Sir, because इसमें अपनी पूरी अर्थ की जो फेमस कंट्रीज हैं जिस पे हमारी पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है वो सारी कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इट इज़ अ मैटर ऑफ एक्साइटमेंट. और कोई खास बात? What is the exciting outcome? Any outcome which you are excited about it? So it became from G20 to G21. African Union was also included. Okay. What was the tagline of the G20? Vasudhaiv Kutumbakam. One world, one earth, one family. Good. Please. Now, Bhawna, Yes, sir. first of all, I want to ask, you have written your name Bhawna Agarwal, Yes, sir. है ना? And now your father's name is Naresh Chand Garg. So why you have changed your surname? Sir, it was changed by my father only Okay. because Garg and 17 other surnames come under the this Agarwal. Agarwal is an umbrella term. Okay. You have talked about meditation. Yes, sir. Please tell us about different chakras. I heard about those. Sir, there are 7 chakras in our body, Okay. and as we do progress in our lives, we go upwards into those chakras. Okay. And more, I don't know much about chakras. You are doing meditation regularly. No idea about that? No, sir. Okay, no issue. No. In which subject you are comfortable? So power systems. Any other? Only Machines. power system. Machine power system. Sir, Kian Rao. You please go ahead, sir, at the end. No. At the end, okay, no problem. Very simple questions, okay? What is pratyahara? Sorry, sir. In meditation, what is pratyahara? Do you know anything about pratyahara? Pratyahara. Yama, Sir, niyama, asana. I read that in my school time. I'm unable to recall that. That's great, that's great. Bhavana, you said that when sir asked about the train, right? Mobile charger, Yes, you sir. said that DC to DC, even if you give AC or DC, after rectifier, DC only will come. Yes, sir. But how that 230 volts is being converted into very less voltage? Maybe 5 volts or 6 volts around. So there is first of all, there is rectifier which converts AC to DC. Then there is buck converter which converts the higher voltage into a lower voltage. So that is used to convert the higher voltage into the voltage that is required by the charger, that is around 5 volts. Okay. So they don't use transformer. No, sir. Because Yes, transformer converts AC to AC.
That's fine. Maybe if I connect current source to the transformer, will flux change depending upon the load, or flux is constant? So transformer is constant flux machine. If you connect a voltage source, if you connect a current source, you can try. You'll be able to do it, I know. So flux is directly related to the current. So if current is changing, then flux will change. No, depending upon the load, I'm saying. If I give AC current source, if I connect a load, will flux change or not? In our transformer, like open circuit kind of, no load. Yes, sir. In no load, flux, whatever the flux you have, in load also flux will be same. If you connect a voltage source, if you connect a current source. Okay, I'll help you. It's a basically network question. It's a mutually coupled network. Okay. Now think. So I'm unable to relate. I'm unable to relate. Think. Take maybe 30 seconds. Operating flux in your networks, will it change or not? In your networks, mutually coupled networks. You have right? Yes, sir. Yeah, mutually coupled networks, you know, right? Will flux change or not? For a current source. In your that particular topic. Mutually coupled networks, network theory, will flux change or not? Okay, it's changed, leave about it. For a transformer, how to find LV and HV? So HV has higher number of turns in case of voltage transformer, and LV has lower number of turns. Also, the insulation is higher in case of HV. So if I show you a transformer, you are going to jump into the transformer by opening that, and you are going to count. Sir, generally we denote the HV in capital letters, and LV naming is in small letters. So directly means independent of anything else, directly with the numbers you are going to go with capital letters or Also, something. there may be tappings on the HV side. Tappings also will be inside only, no? I'm going to show you one transformer. Just by seeing that, you should be able to tell me which side is HV, which side is LV. Think. So generally we do the naming according to that, like in capital letters in HV side. So the naming has been removed by me. HV said bushing lengths will be more. Sorry, sir? HV said bushing lengths will be more. LV said bushing length will be less. While going to your room back, observe one distribution transformer. You will be able to identify HV and LV. Okay. Maybe can we design a salient pole induction motor? Why don't we have salient pole induction motors? In synchronous, we have both salient and cylindrical, right? Yes, sir. Why don't we have salient induction? Sir, in case of induction, there is no role of saliency. Like the principle of induction motor is it works on the relative flux. So whenever there is relative speed, the rotor will rotate. So it doesn't depend on the this salient poles. That's great. Really wonderful analysis. Do you know anything about harmonics? So harmonics are damaging to the system, like they distort the pure AC wave. Maybe harmonics in motor, any space, time, anything. So due to the harmonics, there are often we get sound from the motor. Good, great. Can you explain that or just like that, a conclusion? There are more vibrations in the motor due to harmonics. वो तो सही है,
Can you explain that? Can you elaborate that, or it's going to be a conclusion by you? Will you be able to tell me how that sound is coming or noise is coming? Sir, if there is some discrepancy in the source or the load due to which harmonics are generated, then it would not be pure sinusoidal wave. There would be other frequency harmonics also there, like it would be multiple of 3 or maybe 5 or 7. So due to which there is distortion in the main supply, and so it leads to more heat loss and more energy is used. Okay, enough. Okay, anyway, like as you said, third harmonic torques will be there or not? In what, sir? In any motor or generator. Maybe let us think of motor. We say 5-7. We never say triple N harmonic. Why so? Any specific reason? Third harmonic will be considered in transformer, not in rotating machines. Have you observed that at least? Yes, sir. Only 57. Where third harmonic is going? Sir, I'm not sure, but I would like to guess. Sir, third harmonics are co-phasal. Very good. Enough. That's it. Great. Thank you, sir. Bhavna, you also secured rank 18 GATE 2023. Yes, sir, From in instrumentation. instrumentation. So, have you also applied for masters or any PSUs going forward? Sir, I applied in NPCIL Okay. and I got selected, but I didn't join there Okay. Because of engineering services or Yes, some sir. other reason? due to engineering services. You mentioned last year also you were selected in SSC JEE MES. Yes, sir, but this year didn't- only. Okay. So, you didn't join that. Sir, joining has not come yet. Okay. So, if I get selected in ESE, then joining comes later. So I would have prior experience in MES department as a Group B officer. So that's why I decided to join that. All right. So, no planning for MTech and all, right? No, sir. Okay. So, purely you want to serve the IES post. Yes, sir. Can you tell me what is this mock CID? And you got some first prize in mock CID. So what Yes, sir. exactly it is? Sir, it was in our college fest, there was a event, this mock CID, in which there were 3 rounds. First was just written round, in which there were questions and some puzzles that had to be solved individually. Then second round was there was a presentation and we were asked some questions related to that. And in the third round, we got formed into a group of 3 people, and it was kind of treasure hunt where we had to solve a mystery. Okay. And you got first prize in that, right? Yes, sir. Can we talk about electromagnetic induction? Faraday's law of electromagnetic induction. Okay. So Faraday's law says that whenever there is relative change in the flux, then EMF is induced. And if the circuit is closed, then current will also be induced. Okay. Any applications? Sir, all the DC motors and induction motors, synchronous motors and generators also, they work on this electromagnetic induction. Okay. Do you by chance know about induction cooktops? Yes, sir. On what principle do they work? So on the same principle, electromagnetic induction, there is changing magnetic field due to which EMF is developed, and How that changing magnetic field is there? so by supplying the AC voltage, Then continue, go ahead. when the EMF is developed, then it leads to the formation of eddy currents, which cause heating. So in that case, what type of utensils are suitable for induction cooktops? So I'm not sure. Think about, just try to observe, try to recall. You might have seen somebody cooking on induction cooktop. Sir, I've seen, I just don't know the names, what that material is called. Any guesses? Glass, plastic, steel, aluminum, what it is? I mean, you can have a guess. You just told it is
It is due to eddy currents. Finally, you told. So, what type of materials should be there? So magnetic material should be there in terms of Ferromagnetic, right? So there's something related with iron. Yes, sir. So now say, can it be steel or glass? Steel. Okay. But inside microwave will still work. Have you ever used microwave oven at home? No, sir. Well, I'm not talking about its working principle, but have you used it No, in sir. office, home, somewhere, nowhere? No, sir. Okay, no problem. Sir, small correction, Bhawna. Yes, sir. To develop eddy currents, should be metal, electrical conductor. It need not be magnetic material. Yes, sir. Copper, electric conductor, but non-magnetic material or diamagnetic, whatever it may be. Can you tell me one self-help book you read? Your favorite top one. Sir, Atomic Habits by James Clear. Second. Only one book you read? No, sir. Sir, currently I'm reading newsletters because during my school and college, I used to read a lot of self-help books. The Power of Subconscious Mind I've read, and Do Epic Shit. Good, good. Because I'm also a regular reader. I always carry this to read. Great. Go ahead. भावना मैं आपसे आपके फादर अकाउंटेंट हैं, Yes, sir. मदर आपकी शॉपकीपर हैं, Yes, sir. ठीक है? तो क्या आप अपनी मदर की हेल्प करती हैं? Yes, sir, I do. क्या है वर्क और क्या है नेचर उसका शॉप का? Sir, just it's like normal kirana shop that we. Okay. क्या आपको कभी मौका मिले तो क्या आप उससे एक्सपेंड करना चाहेंगे? Sir, I would not like to work myself Okay. because I'm more interested in technical. But अगर और किसी को अगर वहाँ पे ऐड करना है तो yes, for sure I would like to expand it. तो आपके मोटिवेशन का क्या मतलब कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला कि टेक्निकल फील्ड में आना है? Sir, studies से ही I've always secured first rank in my class. Okay. Like from the nursery till 12th. So from studies only I got motivated. Okay, studies on. No, you can go for what normally girls are going for what medical field. You are in engineering field. So any motivation from any other Sir, persons and so on? My father wanted me to go into medical field. Okay. But I was not at all interested in bio. I was interested in physics and mathematics. So Physics I and chose mathematics. this. Okay, you have choose this. Just मुझे बताइए, what are the basic characteristics of amplifier? Sir, unable to recall. Okay then. Transformer is an amplifier. Right statement, wrong. Wrong statement. So transformer amplifies the voltage or the current. So we can call it as an amplifier How? because it amplifies the voltage or current. It amplifies or step up or step down? Generally, it steps up and steps down, but it may amplify. We have the basic law. Energy can neither be created nor be destroyed. In a transformer, we are using external energy source. Yes, sir. Which source? So voltage source or Whether it is a passive elements or active element? so active element. Active elements. Sorry, sir. Can you repeat your question? Just I have asked, energy can neither be created nor be destroyed. Yes, sir. Right? And we are having a transformer. Yes, sir. We are giving input, we are getting output. Yes, sir. Other than that, we are using any other energy sources. No, sir. Other than that, we are not using any energy. So how we can get the more energy at the output? So the energy is constant. We are not getting any more energy. If voltage is stepped up, then current stepped down. So the product of V and I remains constant. Okay, that's why I ask, what is the basic characteristics of amplifier? Okay, sir. Right? Output power should be greater than what? Input power. So we are getting the same power. Means what is transformer? It's not an amplifier. It's not an amplifier. Okay. Now, tell me about some basic idea about what feedbacks. So which feedbacks?
Any type of feedback? First of all, tell me about types of feedback. So we have two kinds of feedback: positive feedback and negative feedback. Okay. Positive feedback, it increases the gain, Okay. and negative feedback decreases the gain. Okay. Negative feedback increases the stability, and the effect of disturbance is reduced with the help of negative feedback, Okay. while this effect of disturbance increases if we use positive feedback. So we are using positive feedback practically, Yes, sir, it is used in some applications like like sine wave generator or oscillator. okay. Please give me some names of sinusoidal oscillators. I'm unable to recall. You heard about Wien bridge oscillator? Yes, sir. Then okay. Okay, tell me bar quotient criteria. So according to bar constant criteria, the product of A into beta, A is the gain and beta is feedback factor. Okay. Product of A into beta is 1. The magnitude is 1 and the phase is 180 degrees. 180 degrees. Yes, sir. When we are moving from input to again output and again up to input, then what should be the total phase shift? We can call it 0 degree or 360 degree. Why you are saying 180 degree then? Okay, tell me different classes of amplifiers. So we have class A, class B, and class E and F. And what about class A, B and C? I'm not sure, sir. Which class is used for power amplification? That is power amplifier, as a power amplifier. I'm not sure. You heard about push-pull power amplifier? Yes, sir. I've read about it, but right now I'm unable to recall. Okay. How we can convert AC into DC? Sorry, sir. Can you repeat? How we can convert 230 volt AC supply into DC supply? So by using rectifier. Only rectifiers? Can you draw the block diagram for that? So in this rectifier, we can use a diodes or this SCR, Okay. and accordingly we can convert AC into DC. Here we get DC output. We are ready. So what is the use of voltage regulator in the circuit? Okay. Tell me one example of basic linear integrated circuit. So can you please elaborate a little? One example of basic linear integrated circuit. Sorry, sir. You heard about IC 741? Yes, sir. What is this? Op-amp. Okay. What are the specification of op-amp? Sorry. No idea about that, sir. Bhavna, you can wait for 5 minutes. We'll call you for feedback discussions. Thank you, sir. Okay. बैठिए पहले तो आप ये आराम से बैठिए बिल्कुल तो यू आर टचिंग द बैक ऑफ द चेयर No, sir. प्लीज टच इट राइट नाउ इट्स ओके टेल मी वन थिंग हाउ वाज योर Sir, I think just above average. जस्ट अबव एवरेज कहाँ आपको लगा कि आपको एक्सीलेंट नहीं हो पाया Sir, I had not studied analog electronics. Oh. So, वहाँ पे like basics op-amp तो पता ही होना चाहिए था. तो you feel this is the area जो थोड़ा पता होना चाहिए other than core वो आपको लगा कि नहीं होना चाहिए था पर था नहीं अभी और anything else
So majorly to analog electronics. Yeah, Bhavna, वैसे everything is okay, it seems, and you have plenty of time also Yes, sir. for appearing into the main interview, right? Yes, sir. आप कैसे कपड़े वपड़े पहन के जाएंगे? इस मेरे ख्याल में ये काले पीले तो नहीं पहन के जाओगे, हैं? थोड़ा जैसे सोबर ड्रेस होनी चाहिए, Yes, बिकॉज एक्चुअली मुझे तो इतना फीमेल्स का आइडिया भी नहीं है कि व्हाट फॉर्मल ड्रेस दे हैव इन इंटरव्यूज. So actually, I don't think you'll be in the suits like jackets etc. उसमें तो नहीं होंगी ना? नहीं sir. Okay. Either sari और kurti. Okay. I finalized sari, but more difficult क्या? yes sir. अच्छा. Then I switched to kurti. ठीक. But I'm going to change this. हाँ, मतलब थोड़ा सा फॉर्मल लगना चाहिए. ये तो थोड़ा सा कैजुअल ड्रेस लग रहा है, स्ट्राइप ब्लैक चुन्नी. Yes sir. And you were at ease in the whole interview. That's good. Answering में कोई दिक्कत नहीं थी. बाकी जीके भी आपकी G20 के बारे में you were aware of it. It was one earth, one family, one future. But it's okay. It's fine. करंट अफेयर्स और देख के जाइएगा. समटाइम्स होता है ना, जब पर्सनैलिटी ठीक सी लगती है तो लोग करंट अफेयर ही पूछते थोड़ा थोड़ा पता लेने के लिए, और ज़्यादा नहीं, इतना बहुत किसी को कॉम्प्लिकेशन से मतलब नहीं होता इंटरव्यू में. थोड़ा पता होना चाहिए. हाँ, शी इज अवेयर ऑफ थिंग्स, राइट. क्वेश्चन का जो दो चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जैसे ये एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आप लिखोगे, अभी तो इसमें जो लिख दिया वो तो बाइबल हो गई, तो कुछ तो उस बाइबल का एक एक वर्ड का मतलब और उससे थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर आपको देने के लिए तैयार. जैसे मेडिटेशन में विपासना आपने वर्ड यूज किया, तो विपासना वर्ड आपने यूज किया ड्यूरिंग आंसरिंग. Yes sir. सो यू मीन कोई विपासना का बंदा मिल गया ना वहाँ पर, तो उसके लिए वो मटेरियल हो जाएगा. ही विल थिंक कि आप विपासना में इंटरेस्टेड है. ही डजंट वांट टू फेल यू, ही वांट टू नो यू. क्योंकि आपने विपासना यूज कर दिया तो वो विपासना की बात करेंगे आपसे टू मेक यू कंफर्टेबल. पता लगा आपको ज़्यादा पता नहीं है उसके बारे में, सपोज टाइप ऑफ मेडिटेशन क्या चक्रा वक्रा जो करते हैं, तो वो उससे कनेक्टेड जो चीज़, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करें जो यहाँ हो उसके बारे में जरा सोच समझ के थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेंगे. ज़्यादा डेप्थ में जाने का वो सब कोई खास नहीं है. कोर सब्जेक्ट में लोग जा सकते हैं ज़्यादा डेप्थ. इसमें तो खाली इतना ही होता है कि दूसरा, जैसे जनरल इलेक्ट्रिकल में मेरा एज ए जनरल पर्सन जो भी आप चीज़ देखती करती हैं उसके बारे में मैकेनिज्म, उसकी आसपास जो आपका एनवायरनमेंट हो रहा है वो उसके बारे में थोड़ा बेटर पता होना चाहिए. सो पर्सन नोज के यार ही इज़ वेरी अलर्ट एंड ऑब्जर्वेशंस. उसकी बहुत हाई टेक्नोलॉजी तो आपका सब्जेक्ट है अंदर का, पर जनरल एक बता सकें आप किसी चीज़ के बारे में, उसके बारे में काफ़ी कॉन्फिडेंस सा लगना चाहिए. जिन्होंने इंडक्शन का कुछ पूछा है, डी करंट से मैग्नेटिक व्हाटएवर इट इज देयर, उसका आप कॉन्फिडेंटली रिप्लाई. अब आपने माइक्रोवेव ओवन नहीं यूज़ किया है, पर माइक्रोवेव इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज. सो अगर नहीं भी यूज़ किया है तो आप किसी को देख लो यार, समझ लो उसको. नहीं, इंडक्शन मोटर, इंडक्शन क्या वो कुकिंग वगैरह जो होती है उसमें भी बहुत काफ़ी कॉमन है. जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में कौन सी मोटर लगी है, हाँ. ऑटोमेटिक में क्या है, आप कैसे दोनों साइड रोटेट कर रहे हैं. अप्लायंसेस वगैरह जो मिक्सी में आपकी कौन सी मोटर लगी है, फैन में आपकी कौन सी मोटर लगी है. और आप अपने आप ही क्वेश्चन तैयार करिए, इसमें ये क्यों नहीं लगा, ये क्यों लगाया, तो उसका आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा. अब ट्यूबलाइट्स है जो पहले वाली, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ट्यूबलाइट्स पहले वाली वो ब्लिंक करती थी ना, अब आजकल ब्लिंक नहीं करती, सीधा ऑन हो जाती है एक ही बार में. तो उसमें उसका स्टार्टर का क्या रोल था, चोक कैसे काम करता है. और अपने आप ही may or may not be asked you questions, but you will feel more confident when you know all the things that surrounding you. You become very confident in answering, right? वो आपको हेल्प करेगा. और जहाँ पे इंटरव्यू आपको लग रहा है अनकंफर्टेबल है, या तो उसको जैसे आप मना कर ही रही हैं, ठीक, राइट. और अगर अदरवाइज उसी में से कुछ निकालना है तो कुछ एक कीवर्ड उसमें डाल दीजिए आंसर में, तो वहाँ से इंटरव्यू आपके फेवर में चला जाए. ये भी एक तरीका होता है, ठीक है. So like I was not comfortable in analog electronics. So how? तो वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ये बताएंगे क्योंकि मेरे को खुद आइडिया नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक्स इज नॉट योर, आई अंडरस्टैंड, इज नॉट योर कोर सब्जेक्ट. कोर सब्जेक्ट तो आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना. Yes, दे sir. मस्ट बी टेस्टिंग ऑन सम अदर पॉइंट, नॉट एग्जैक्टली योर टेक्निकल नॉलेज, राइट. कि हाउ डू यू नो ऑब्जर्व थिंग्स, हाउ डू यू रिप्लाई और अवेयर, दैट्स ऑल.
Nothing more than that. To my mind, they will tell you. Okay? Please. मैंने जो भावना एनालॉग के जो क्वेश्चंस पूछे ना बहुत बेसिक से पूछे। इसका मतलब जैसे मैंने आपके इलेक्ट्रिकल से ही इंटीग्रेट किया था उसे। मैंने जब आपसे पूछा कि ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर है या नहीं है, तो आप इसे ये नहीं बोल सकते कि आप मतलब इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स है। कहीं ना बाउंड्री है जहाँ से आप स्टार्ट होते हैं। जैसे आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट करोगे तो मैं आपको सिंपल बता दूँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक मसल पावर है और इलेक्ट्रॉनिक्स ना ब्रेन पावर है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या सभी डिवाइसेस को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। जैसे आप कोई भी सिस्टम कंट्रोल सिस्टम जब आप लगाएंगे ना तो डेफिनेटली आप इससे कंट्रोल, तो मैं आपको नहीं बोलूँगा बिल्कुल डेप्थ में जाओ, बेसिक्स जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपने बिल्कुल उसको माना कि मुझे इतना तो बेसिक पता होना, ये तो बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको। मुझे नहीं लगता कि आपने मेंस निकाला ना तो 1 डे भी नहीं लगेगा आपको पूरा जितनी हमको ज़रूरत थी उसको आपको, जैसे मतलब आप ऑपएम्प के स्पेसिफिकेशन बता दोगे। अभी मैं आपसे अभी कूल पूछूँ तो 2 मिनट में आपको खुद ही याद आ जाएगा कि इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे आप, है ना। उतना आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि आप एनालॉग या कम्युनिकेशन तो पूछा ही नहीं जाएगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आप आराम से भी जवाब देंगे ना। ठीक। दूसरा एक पॉजिटिव पॉइंट था कि ब्लफ नहीं किया आपने। मतलब एक होता है कि नहीं जानते हुए भी अटेम्प्ट करना, वो क्या होता है स्पॉइल कर देता है बहुत। मतलब आपको 40 मिनट्स में परफॉर्म करना है, तो ये एक पॉजिटिव था कि आपने किसी भी चीज़ में सॉरी बोल के आप आगे निकल गए। तो ये फील मत करो कि सॉरी बोलना कोई नुकसान वाला काम है। मतलब आपने अच्छे से बताया, नहीं आता तो आप ज़बरदस्ती आपका अपना दोनों का टाइम किल नहीं किया आपने। कई बार क्या होता है बताते ही जाते हैं हम, पूरे सिस्टम को क्या करते हैं स्पॉइल। और एक बहुत पॉजिटिव था कि किसी भी जवाब को ना आपने ना तुरंत नहीं दिया है। मतलब आपने आराम से पॉज किया 5 सेकंड तक और 5 से 10 सेकंड में फ्रेम किया। ये इसको थोड़ा और बढ़ाओ, पूरा इंटरव्यू आप रन कर लोगे। मतलब आपने जो जवाब दे रहे हो, जवाब दे रहे हैं, जो आप आंसर कर रहे हो उसी आंसर से फिर क्वेश्चन आएगा। तो कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ मत करना जिसके बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं है। मतलब एक तरीके से समझ लो जो इंटरव्यूअर है ना वो स्टार्ट बस करता है, फिर रन आप ही करते हो, फिर आप ही बोलते हो, फिर हम ही उनमें से क्या बनाते हैं क्वेश्चन। 90% केसेस में ऐसा ही होता है। एक तो आपका DAF, फिर उसके बाद आपके जवाब। तो सर ने आपको बोला कि DF के एक भी वर्ड्स को जो भी आपने लिखा है, हम मेरा सजेशन ये है कि उसके ऊपर 4-4 लाइन आप सबको, मिनिमम 4 लाइन्स आप लिख लीजिएगा। सर एक क्वेश्चन था। हाँ नहीं, आप क्वेश्चन पूछिए। सर जैसे आपने पूछा था कि क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर, तो उसमें मैं अगर श्योर नहीं हूँ तो मैंने ऐसे ही आंसर बता दिया जितना मुझे याद था, तो वो बताना चाहिए या नहीं? नहीं, आप आई एम नॉट श्योर सर। बस क्या मुझे या तो पूछ सकते हो क्या मैं ट्राई करूं, अगर सामने वाला बोल रहा है ट्राई करो तब तो ठीक है, पर नहीं रहन दो बोल दिया मतलब आप ड्रॉप कर दो, क्योंकि आपका टाइम इंटरव्यू में निश्चित है। हाँ, वो आपको जानना चाहते हैं, तो आपने टाइम अगर वेस्ट कर दिया तो वो चीज टाइम वेस्ट हो गया ना, आप ही का टाइम वेस्ट हो गया। 40 मिनट्स में आपको अपने आप को जस्टिफाई करना है और आप हर एक सेकंड मतलब आप समझ लो यूज़ करना है, तो आप उसके हिसाब से तैयार कीजिए। आपका जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है थ्रू आउट द इंटरव्यू इज योर कॉन्फिडेंस लेवल, बी इट यू आर एबल टू आंसर, बी इट यू आर नॉट एबल टू आंसर, राइट? ओके, बट यू एक्सप्रेस योरसेल्फ वेरी क्लियरली। ओके, भले आप अपने आप के बारे में बात कर रहे हैं, इफ यू वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट जनरल अवेयरनेस, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट मशीन्स, और जैसे एनालॉग के आप नहीं बोल पाए तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है कि हाँ व्हाट यू डिडंट नो यू क्लियरली डिनाइड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। But definitely, since you are electrical core, so you are expected that machine, power system and even power electronics, they will definitely be touching. But जैसे सर ने analog touch किया और basics ही touch किया, other than that मैं बोलूँगा analog and even controls and EMFT. Maybe they'll not go for electrical, digital पे नहीं जाएंगे ज़्यादा, signals पे शायद ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। But ये subjects हैं जो आपने specify नहीं भी किया, but still they can touch, but they will touch to the basic level, not like very in depth. ठीक है, सो स्टिल बिकॉज आई एम टेलिंग यू बिकॉज यू हैव टाइम मोर देन 1 month, तो कोर आपका अच्छा है, ठीक है। आई थिंक केन सर विल टेल यू मोर, बट मैं देख के समझ में गया था कि यू आर एबल टू आंसर मशीन्स प्रॉपर्ली, ओके, बट द अदर पार्ट्स लाइक एनालॉग कंट्रोल एंड बेसिक्स ऑफ EMFT यू कैन ब्रश अप, टाइम इज देयर, तो दैट्स अ मैनेजेबल थिंग, एटलीस्ट द बेसिक्स यू कैन ब्रश अप रिगार्डिंग टू कोर एरिया। और सर ने एक और बात, सर्किट थ्योरी भी थोड़ा ना आप देख लीजिएगा, जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में सर ने कहा था ना। Sir, I couldn't understand that part. Actually, point here is the moment I said transformer, your mind was struck at machines. That's why I clearly informed network, mutually coupled network. But you are unable to come out of that because you are so struck there. That's it. All the best.
भावना इसमें एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं बोलूँ आप वो बकेट उठाओ, तो बकेट रखिए आपके ऊपर, मैंने बोला वो बकेट उठाओ, तो आपके दिमाग में दो ख्याल आएंगे, या तो बकेट भरी हुई है या बकेट खाली है। तो आप जब पहले ही भरा हुआ सोच रहे हो ना, तो आप पहले से ही एफर्ट लगा दोगे, उसमें आपके हाथ में लचक आ जाएगी। समझ रहे हो आप बात? वो सर ने कई बार इजी क्वेश्चन पूछा और आपने सोचा कि तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो आप उसमें मतलब आप डीप में बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। और इंटरव्यूअर को लगना चाहिए कि आपने फुल्ली सुना है उसको, आप समझ, और आपको भी कंफर्ट रहेगा सुनने के बाद जो रिप्लाई बनेगा बहुत अच्छा रिप्लाई आएगा। So even connecting with the network, I could not relate it. Even now also, Yes, sir. just draw one transformer. Yes, sir. Core. I do this. Primary, secondary. Primary, secondary. Primary में एक current source. Number of turns N1. Yes, sir. Total mm में phi1 N1. Yes, sir. के बारे में flux phi1. Phi1 linking with N2. Yes, sir. V2 is the voltage. Yes, sir. So that V2 is the voltage. Total flux is pi1. Now if you connect a load, voltage is there, Yes, sir. current should be circulated. For that current, flux will come, pi2 will come. Yes, sir. Okay. But in voltage source, what will happen? In order to compensate pi2 dash come. Because of that, it will take more current. But it's current source now. It cannot take more current. So flux will vary. Okay. I got it now. Simple network. That's it, right? In mutually coupled network, current sources will be there, not voltage source. Enough. Thank you, sir. Thank you. All the best. आपको कुछ और पूछना हो तो पूछ लो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, कोई दिमाग में आ रहा हो इंटरव्यू से। नहीं सर, अभी तो ये आपका फर्स्ट मॉक था? यस सर। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।